Can you watch my screen? So today we are talking something about technicals. Can you watch my screen? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. See, this is a daily chart, and I've done very not put any complications on it, and I've done very simple things on it. This is a daily chart of Nifty small cap index. Let's take Nifty mid cap. Mid cap लेना हम लोग mid cap में ज़्यादा जाते हैं ना. Let's take mid cap 100. Let's take this one. तो मैंने वॉल्यूम तो इसमें कुछ होता नहीं है, तो मैंने सब वो हाइड करके रखा हुआ है. This is a very simple basic chart. So now, since market has given you some pullback and stock prices are going down and everybody is jittery about it, or maybe not jittery about it, I don't know. चिंता तो सबको होती है ना जब नीचे जाता है. क्यों होती है कि नहीं होती? हाँ जी. So how do you tackle shocks and how do you prepare yourself for shock? See, my intent is not to give you anything on for trading or anything of that sort. So this is a simple 30-day moving average. आपको 30 लेना है, 20 लेना है, कुछ लेना है, तो this is a simple 30-day moving average. Last few months, from May till अभी आपका February आ गया, right? इसके बारे में तो कुछ बात करने की जरूरत है नहीं, ये तो सबको पता ही है. बताइए. हाँ जी सर. Yes, sir. This is the will stop indicator which will give you in and outs. See, I will not be discussing any more charts. मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ. ये will stop indicator मैंने technical thread में आपको share किया है. So basically, it will protect you from large drawdowns. It will not get you out on the top. Of course, nobody can do that. It will protect you from large drawdowns. अगर आप एक trade mindset से हो. Since this is a daily chart, let's go to the monthly chart. This is a monthly chart. The point is, this mid cap is 47,800, but the stop loss it says 38,600. So you cannot take so much of drawdowns. Top नहीं पकड़ेगा, but आपको जल्दी out भी नहीं करेगा. The larger the time frame, the better it is for you. Suppose I go to the weekly chart. Have a look. And this will work across everything. Future low, option low, cash low, currency low, India market low, बाहर low, कुछ भी low. ये सिर्फ आपकी protection के लिए है. Suppose weekly में ये जो mid cap nifty है, the red line and the green line. When the red becomes green, you have an entry. You can use it as an entry tool and an exit tool also. You are not getting out at the top. You are getting out somewhere around here. Correct? तो मैं इसको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इसको एंट्री और एग्जिट के लिए लो, बट यू कैन हैव अ सेंस कि मेरे को यहाँ खतरा लग रहा है. अब एक एग्जांपल लेते हैं. पॉलीकैब में कार्नेज हो गया था एंड पॉलीकैब वेंट डाउन मैडली जब उसमें वो फ्रॉड टाइप कुछ हो गया था. दिस पॉलीकैब just this पॉलीकैब. देखा सर, अब ऐसा तो है नहीं है कि हम हर एक को ट्रैक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते. But at least 5-10 companies which we have in our portfolio, and you are very worried about it, about the prices, and you are not in a condition to take such kind of a shock, which nobody knows. Can you see this? अभी हर आदमी बात करता है वैल्यूएशन ज्यादा है, मार्केट कब गिरेगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता. क्या हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? एक मिनट सर, आई विल ऐड जस्ट 1 सेकेंड. मेरे को एक इनवाइट भेजना है. अभिषेक जी को मिलता नहीं, क्यों पता नहीं क्यों. कहाँ गए यार अभिषेक जी? Can anybody add Abhishek ji? I'm not able to find his ID. अभिषेक सर एडेड है. So already है. Sir already added. अच्छा, ओके. इसलिए मेरे को देख नहीं रहा था वो. See this.
मैं आपको ट्रेडिंग एस्पेक्ट में नहीं ले जा रहा हूँ, बार बार मैं इस चीज को एम्फोसाइज कर रहा हूँ, मैं आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रोटेक्शन एस्पेक्ट में ले जा रहा हूँ। यू कैन यूज दिस टूल, मैंने इस टूल का वो लिंक शेयर किया हुआ है टेक्निकल थ्रेड में। द लार्जर द टाइम फ्रेम द स्लोअर द एंट्रीज एंड एग्जिट्स। आपको इसको एंट्री एग्जिट में यूज करना है करो, आपको इसको प्रोटेक्शन में यूज करना करो, वो आपकी मर्जी। टूल है हमारे पास तो उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू ऐड टू दिस इज समथिंग कॉल्ड दिस। पहले भी कई बार इसका डिस्कशन हुआ है, सब आई थिंक भूल गए, समथिंग कॉल्ड दिस। अगर मैं आपसे 1 मिनट ये चार्ट देखने से पहले कुछ बात करूं, सपोज यू कॉल अप योर ब्रोकर एंड यू आस्क हिम द प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक और XYZ कंपनी, आप उसको क्या पूछोगे? फोन पे आप बात करोगे तो उसको क्या पूछोगे? क्या भाव चल रहा है? करेक्ट करेक्ट, व्हाट इज द प्राइस। तो वो क्या बोलेगा? 2% ऊपर या 1% नीचे या जो भी चल रहा होगा वो आपको बताएगा। वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपको कल के क्लोजिंग प्राइस से या लास्ट पीरियड के क्लोजिंग प्राइस से अभी का एक रेफरेंस बता रहा है। ऐसे ही होता है। राइट, हाँ जी। कल का जो वीकली है या कल का क्लोजिंग है, जो भी लेटेस्ट क्लोजिंग पीरियड है, उस पर आपको आज का रेफरेंस बता रहा है कि इट इज अप और डाउन बाय एक्स प्राइस और एक्स परसेंटेज और वाई परसेंटेज। What we are more interested to know is, see, we are retailers. Sometimes what happens when we get up into the morning and we want to see what the stock price is, and we pick up our phone, हमारे को घर में काम होते हैं, then we rush into office. We are never there when the markets are opening. The professional guys are always there because their daily bread and butter is their job. Maybe the CNBC guys or these guys are always on the board. So who decides the opening of the market? The professionals. Who is there always at the closing of the market? We, the public. So what I'm trying to do over here is, again, don't take it as a trading. The green ones are the professionals, the red ones is the public. Now overlay this, let's hide all this with your stock price move. Have a look. I am on a weekly basis. I can go down to daily also or monthly also. बाकी वो सिंपल स्ट्रैटेजीज आपको सबको पता है। स्टॉक प्राइस गोइंग अप, प्रोफेशनल्स नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड बिफोर द ड्रास्टिक फॉल, वो सब चीजें आपको करनी आती हैं। आप इसको मंथली में भी कर सकते हो, आप इसको डेली में भी कर सकते हो, जैसा आपका फोकस है, जैसा आपका मार्केट का अप्रोच है। नो सीरियस, निफ्टी मिड कैप, अभी 1-2 दिन से मिड कैप स्टॉक नीचे गिरने शुरू हुए हैं। यू माइट बी इन सम वरी। दिस इज अ डेली चार्ट। मार्केट प्राइसेस आर गोइंग अप, professionals not very much interested. Market prices are going up, professionals not very much interested before the drastic fall. Professionals not very much interested. एग्जैक्ट कहाँ टॉप बनेगा, एग्जैक्ट कहाँ बॉटम बनेगा, मुझे नहीं पता, और मुझे पता करने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। I can do this on a weekly also. Same thing. अभी that makes it very obvious. Professionals going down and they are not interested and they are here below the buying level of the public. Market prices will not rise. Now there, here you see these professionals become very happy to buy mid cap companies. Mid cap companies are booming. Any business, any company you would like to see? सर इन दिस केस अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ऐसे दिखा रही है कि इवन द प्रोफेशनल्स आर सेलिंग एंड द मार्केट इज आल्सो कमिंग डाउन। सेम Of सेम। course, of course, no. On a weekly basis, professionals are selling. अभी तो आपका मिड कैप्स कारने चल रहा है, मिड कैप्स are going down, और आपको सारे आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज, बिकॉज वी आर मोस्टली ऑन मिड कैप्स, आपको सारे पोर्टफोलियो की कंपनीज नीचे जाते दिखेंगे।
So this is a general 100 top mid cap 100. हो क्या रहा है, आप किसी से बात करो, अरे यार बहुत हालत खराब है, स्टॉक प्राइस नीचे जा रहे हैं, लॉस लॉस हो रहा है, वो बोलेगा यार मार्केट तो ऊपर है, निफ्टी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है. This don't use it as a timing tool, you will get into losses. If you use it as a timing tool, just you can use it to get a sense how to you can absorb shocks. Just use it as a sense with the companies in your portfolio. So can I you take shared, Cargill as an example? ma'am, which example? आपके आवाज कर रहा है कोई? Cargill, Acrysil या Cargill? Carousel. Yeah, you go. See, there is no indicator on the chart. Simple candlesticks, कुछ नहीं है. If I tell you, अगर हम ब्रेकआउट्स देखते हैं, अभी मुझे नहीं पता क्या होगा, ये एक ब्रेकआउट हो गया हमारा, अगर मैं ब्रेकआउट की भाषा में बात करूं, और ये मेरा वो कप एंड हैंडल जो भी हो गया, या ये मेरा कप हो गया और ये मेरा हैंडल हो गया. You have a breakout, but the professionals are not very much enthusiastic about this. This is not likely to sustain. मैं नहीं बोलता आप अपना सेलिंग डिसीजन इसके ऊपर बेस करो या बाइंग डिसीजन इसके ऊपर बेस करो. इसको आपने एक जनरल नाम लिया है, प्राइस इज 1111. Let's look at it after say 1 week or 2 weeks, or maybe since this is weekly, let's look at it after 1 month or so. अगर जैसे हम ये वीकली में ट्रैक करते हैं तो मतलब हमें वीकली क्लोजिंग का वेट करना चाहिए या मिड ऑफ वीक में भी हम डिसाइड कर सकते हैं अपना? डिसाइड कर सकते हो. Okay. When you mix this with your fundamentals, with your special situations, with your open offers, और जो भी हम चीजें देख रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, right? When you mix this with all this, then see what happens. Now I'll go to IRIDA, क्योंकि IRIDA में इतना फोमो था, वैल्यूएशन, IRIDA में इतना फोमो था. तो दिस वाज क्या बोलते हैं उसको, आईपीओ शायद यहाँ आया था. तो ये आपका डेली है, ये आपका कप एंड हैंडल है, जो भी है वो मुझे पता नहीं, और ये आपका एक ब्रेकआउट है, करेक्ट. बिफोर दिस ब्रेकआउट, इधर मैं इस कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जब ये डिंग डाउन कर रहा था एट अ प्राइस ऑफ 120. लुक एट द स्ट्रक्चर. दिस इज अ बेसिक चार्ट. आई विल जस्ट हाइड ऑल दिस. लुक एट द स्ट्रक्चर. ये चीज आपके पास थी, इसको भी हटा देते. They were very much interested, the professional very much interested by जो भी इनके पुराने peaks थे. Public was down, they were not interested, professionals were interested. और कोई ऐसा आपने स्पेशल सिचुएशन पढ़ा हो, जो काम करा हो या नहीं करा हो, और आपको देखना है कि उसके अंदर क्या था, you can use some bit of understanding of the short term moves in the market. And before this, the peak was here, the stock prices were going up, they already started moving out. Stock prices peaked out at 220 पर, वो पहले ही बार आ चुके थे. And when it started falling, now the public wants to buy at every dip. गिर गया यार, और कितना नीचे जाएगा, अब कहाँ जाएगा भगवान जाने, किसी को नहीं पता. BSC का FOMO. See, I use this just to get an understanding. I never use this as a timing tool. BSC का FOMO. हम लोगों ने शायद एक BSC में कॉल करी थी, डिलीवरी वॉल्यूम्स वर गोइंग अप ओवर ईयर. Okay, give me 1 second, please. I got a call. Give me 1 second. BSC का FOMO. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो. एक सेकंड.
Anybody wanting to join, please invite them, because while I'm sharing the screen, I cannot see. तो BSC का FOMO. So the FOMO was, यहाँ पर क्या हो रहा था, if you go and look at the NSE page or the, because BSC NSE में listed है, यहाँ पर crores of deliveries were happening and there was no news in the market. Crores of deliveries were happening. The crossover, the simple study happened somewhere around here. This is the crossover. Somewhere around here. And they started moving out somewhere around here. And this is your stop loss. Now again, BSE market price has gone up, but they are still not interested. देखते हैं क्या होता है. सर ये और वो लार्ज ट्रेडर सेम है? वो अलग है सर, वो अलग चीज है. वो एक अलग चीज है. वो एक ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपके पास टाइम हो, आपको मेरा टेलीग्राम दिख रहा है सर? हाँ जी दिख रहा है सर. अगर आपके पास टाइम हो, सी इसमें तो मैंने एक्चुअली, पीपल थिंक दिस इज अ टेक्निकल, दिस इज नॉट टेक्निकल. इसके अंदर आई हैव मेड इट फंडामेंटल्स. हाउ डू यू blend fundamentals, how do you get fundamentals of the chart, how do you understand. This is for the long term traders or the long term investors जिनको 2-3 साल 2 साल 3 साल काम करना है. दिस इज फॉर जो उनको डर ज्यादा लगता है, क्योंकि कल को मार्केट में क्या हो. तो मैंने को सोचा कि आपको एक ये चीज शेयर करूं जो आपका थोड़ा सा डर कम कर सके. और कहीं आप फंसे हो, आपको पता नहीं है क्या करना है, कोई आपको न्यूज नहीं मिल रही, कोई अपडेट नहीं मिल रहा, और आप किसी से पूछ नहीं पा रहे, तो ये आपका डर दूर करने के लिए. सर एक डाउट है. हाँ सर. सर ये जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं क्या? जस्ट दिस ग्रीन लाइन कैसे जा रहा है और रेड लाइन कैसे जा रहा है, और वी हैव टू लुक एट द पैरामीटर्स आल्सो. सपोज व्हेन ग्रीन इज, You look at the parameters. No, I am just trying to take out the fear from you. I'm not telling you to throw and trade like this or buy here or sell here. I'm just telling you what is actually happening. See, this is how the professionals work and this is how the public works. If you go to an hourly chart, you will definitely get flip flop. See, hourly chart, up down, and you keep doing all this. Go to a weekly or a monthly chart, no? Go to a monthly. The larger the time frame, the slower it is. But can you take so much of drawdowns? You can't take so much of drawdowns. Nothing is perfect in stock markets. this is the percentage of buying, ratio of buying between the Sir, public. I said this is not the percentage. I mean, just don't look at the numbers. See, they are not happy to buy over here. Correct? Now you should be very scared or skeptical on this place, on these areas. Why they are not buying? Is there something, the news is coming out or something is happening? They might again start buying, and you might be a long-term shareholder and you can wait for say 6 months. Nothing happens, no problem. But if you are not a long-term shareholder and if you are worried, and obviously the valuations are high, and you cannot, they see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 weeks. How many months? 3-4 महीने तो हो गया. 3 months. 3.5 months तो हो ही गया ना. 3.5 months you have got nothing. If you are very worried about alpha generation and FOMO, your friend is earning more than you, your colleague is earning more than you, and you are having nothing, and you bought at high prices or whatsoever. But if you are happy with to hold on for 3-4 months, 6 months, maybe 1 year with zero returns, doesn't trouble your mind, then don't take any actions. Anything else you want to see? Any company? Random name? कि आज हिंडाल्को में कुछ हुआ है. हिंडाल्को या तो एक्स बोनस हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं मुझे. आई डोंट ट्रैक हिंडाल्को. दिस इज हिंडाल्को एंड दिस इज योर डेली चार्ट. हैव अ लुक. गैप डाउन हुआ है.
यहाँ आपको एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिला होगा ना. Now suppose you bought it somewhere around $580 फोमो में आके कि ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया. Now you're stuck. और यहाँ इसने भी आपको कुछ ऐसा कोई एग्जिट सिग्नल तो दिया नहीं है. You cannot go and make your decision on every twist and turns. Not possible. So it's not a perfect science. ये परसेंटेज है या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको. दिस इज नॉट अ परसेंट, दिस इज इंडेक्स टू 0 to 100. अब ये परसेंटेज है क्या नहीं, उस सब चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ. You can just do this to protect yourself. Any other shock or any other thing which you might think you might have experienced or watched or seen in the last few weeks or days, anything you want to see? Avanti feeds. Avanti feeds. BSc, NSC, which one should I take? NSE. NSC. So this is your daily chart of Avanti feeds. Sir, Polycap, Paytm. Polycap already shown. सर Polycap Oh, already sorry. shown. Okay. Sorry, I missed it. Okay. सर 1 सेकंड, ये अवंती फीड्स में अभी डेली चार्ट में ये मतलब फिर से जो रिवर्स दिखा रहा है, तो इट इज शोइंग दैट बाइंग इज कमिंग, ऐसा ही है ना इसका मतलब? I don't know sir, I don't know. अगर ये मैंने बोला ना, आप every twist and turns पे जाके आप अपना डिसीजन नहीं बना सकते हो. नहीं डिसीजन नहीं, एक इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब जैसे वो Suppose टर्न बता रहा है. this buying goes above this area, then Okay. somewhere it might start making some sense. अगर ये गया कल को फिर सेलिंग आ गया तो फिर क्या होगा? हाँ, ओके. देखा और है डेली में डेली तो बहुत फ्लिप फ्लॉप है सर. डेली तो फास्ट आएगा. डेली फ्लिप फ्लॉप. मंथली देख लो. See, you know what technical patterns, वो सब मेरे को बताने की जरूरत है नहीं. आपका ब्रेकआउट हो रहा है, जो हो रहा है, and with this you are getting a confirmation on this, you can have a good sense. एक कौन सा था, पेटीएम. अभी पेटीएम में आरबीआई का कुछ डंडा आएगा, वो किसको पता था? You see this? Stock price was moving up. These guys were not at all interested. And the will stop or the stop loss gave you an indication here. I think यहीं से गिरा था शायद वो. 848 it gave you an exit. 850 rupees. And by the time public professional is also gone below the public buying. And public is still holding. They are steady in their positions. And this is the weekly chart. इसी का अगर मैं डेली कर देता हूँ, कि अगेन बार बार बोल रहा हूँ, डोंट यूज इट एज अ टाइमिंग टू ट्रेड. will not work for you. It's not very easy to do all that. यहाँ पर आपका वो exit point था, which is this low, which is 935. This stop loss is also mechanical. This is how we, the retail, get in and out, and the professionals get in and out, and ये उनका एक mechanical stop loss होता है जो आपको एक protection method दे देगा. So this short session was just to help you get out of FOMO, get out of fear. I have not talked about any candlestick, any pattern, कुछ नहीं, कोई volume नहीं, कुछ नहीं, कोई volume profile नहीं, कोई indications नहीं, कुछ नहीं. वो क्रॉस ओवर आपको पता है क्या होता है, अप डाउन आपको पता है क्या होता है, वो सब चीजें आपको पता ही है. एनी वन और टू नेम्स यू वांट टू सी बिफोर वी कंक्लूड? सर न्यूजन सॉफ्टवेयर. मैम आपकी तबीयत ठीक हो गई? नहीं सर, बीमार हूँ.
फिर भी मार्केट क्या पैशन है न्यूजन सॉफ्टवेयर. See, here you get stop out, stop in, stop out, stop in, but they are still very happy to hold. Na? I am on a weekly chart now, and see now when they are not very good, and it started coming out here. Can you see the price above and with this over here? This was 783 rupees high of this week, and they started coming out, and the stock market was going up. It went to 900. From 783 till 900, they sold. तो जितना भी आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पर 783 to 900 छोटा छोटा वॉल्यूम दिख रहा होगा. दिस इज जस्ट द सेलिंग वॉल्यूम ऑफ द प्रोफेशनल्स. अगेन कैन यू सी दिस इन दीज 3 वीक्स. मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ एरो का. इन दीज 3 वीक्स अगेन आई जस्ट ड्रैग माय माउस 1 week 2 week and 3 week. बट अगेन मैं ये फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्या अपना डिसीजन बेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ. आई कैन गो रॉन्ग ऑल्सो. So how do I do that? Actually, I cannot catch the top, which nobody knows how to do. किसी को आता है तो पता नहीं, मुझे तो नहीं आता है. अब वो कहाँ गया पहले यार. I'm very bad at this. चलो. When it is breaking this trough or peak, bottom, somewhere around here. You see this? They came down, but the market price was going up. ठीक है? माउस और हटाता हूँ मैं. They broke this low also, they broke this low also. वो सब खत्म हो गया. And the week when it was going up, the stock went up by 4%. And then came the down. Sir, can we check Vari as well? Which one? Vari Renewable Technologies? Yeah. This is Vari. Let's go daily. Look at daily. You have stopped out here, 4454. But since it is going circuit, we couldn't have got on. And if I go to the weekly, we're still strong. No previous lows and all broken, we're still strong. Your stop loss in a weekly is $3,008. It's been around $1,000. Can you take this downfall if you don't get this? Doesn't trouble your mind. Okay, now to add this, I have added this. This is the will stop indicator. This one. You can click on this link. Go to your trading view subscription और जो भी आपके पास है subscription नहीं है, और यहाँ जाके आप कर सकते हो add to favorites. Then it will start showing in your favorites in your account. Then what you can do is you can I think मैंने share किया था here you can click on this. I made it as a hidden indicator. Don't want to show to the people. Go and add it over here and you will get your stuff. Okay. This is very useful. Thank you for sharing. So you can have your protections in times of shocks. You can try and absorb shocks. See, again, before moving ahead with this call, don't use it as a trading technique. You are prone to have losses. Use it to protect yourself. And what are you reading? Your announcements or your mergers, demergers, special situations, and then try and track on all this. So one thing I want to show you over here is, give me 1 second, is okay. Rajasthan Gases का सबको FOMO था. Since it was a company of 4 crores market cap and we bought, see who was buying. After that announcement came, or after that special situation में
वो सब चीजें आई थी. अगर आपको देखना है तो स्क्रॉल बैक टू द रिकॉर्डिंग सेक्शन एंड सी द सेशन इज शेयर्ड ओवर देयर, राजस्थान गैसेस, आपको समझ में आ जाएगा. एंड दिस वाज द वीक where both Neeraj ji and Pankaj ji also got. सर बट इसमें ट्रेडिंग बंद है अभी. पता है मुझे. सी आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं? ट्रेडिंग बंद है, ये है वो. मैं आपको प्रोसेस और लॉजिक दे रहा हूँ. मैं कोई इंडिविजुअल कंपनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ. अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग बंद है तो मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ सर, डेफिनेटली यू आर इनटू फोमो, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट. राइट. चलो, मैंने आपको टूल्स भी शेयर कर दिया है. बाकी इफ यू हैव टाइम, वॉच द कॉर्ड सेशन, दैट इज टोटली माइंड ब्लोइंग. यू विल बी शेकन अप. दिन में मिलते हैं, विल डू द नेक्स्ट कॉल. आई विल शेड्यूल दैट कॉल. Okay. Have a good day, everybody.